When the dreams are strong enough and the purpose is strong enough, we will pay the price. हम सब लोग जानते हैं कि कुछ लोग जो है वो कम मेहनत करते हैं एंड दे आर हाईली सक्सेसफुल, एंड कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत सारा हार्ड वर्क करते हैं बट फिर भी उनके पास उतनी सक्सेस नहीं मिलती है जितनी कि दूसरे कम मेहनत में ले आते हैं और कर पाते हैं। क्यों ऐसा होता है? थिंक अबाउट इट। Okay. So, in fact, in my personal life also, I were having the same question, ditto, right? यही होता था when I were having the first startup। तो मैं बहुत सारी चीजें जो है I was putting lot of efforts। दिन के जो है वो 17-18 घंटे काम करता था, मॉर्निंग टू लेट नाइट तक, एवरी डे, एंड देयर वर नो वीकली ऑफ्स, नथिंग, राइट? And still, the entire journey, the entire the startup went fail after 8 years. After 8 years, I have shut down that particular business, and then I have started something called vyaparjagat.com. So when I have started vyaparjagat.com, it was like, uh, you know, it was like I thought I will plan lot of things, because in the first journey, I have experimented lot of things, and I have learned a lot from all those failures. And सबसे बड़ी जो चीज मैंने सीखी थी, एंड दैट वाज कि हम जो भी चीज करना चाहते हैं, इट शुड बी ऑन द पेपर फर्स्ट। और ये बहुत प्रैक्टिकल है। मतलब आप अगर एक छोटा सा प्रोजेक्ट करना चाहते हो, आप एक बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हो, या फिर आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस है, पुट ऑल योर एक्सपेक्टेशंस ऑन द पेपर। जब आप आपके एक्सपेक्टेशंस, मतलब आपके गोल्स, आपको क्या चाहिए, मैं नीड की बात नहीं कर रहा हूं, इट इज अबाउट योर वांट्स। आपको क्या चाहिए, वो सारी चीजें जो है वो आप लिख दो कहीं पे। कुछ ट्रेनर्स, कुछ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, जब ये बहुत कोशिश करने के बाद भी समझा नहीं पाते हैं कि क्यों आपको गोल सेटिंग करनी है, क्यों आपका विजन बोर्ड होना चाहिए, तब वो एक थंब रूल बता देते हैं, एंड दे सेज यू सिंपली राइट इट डाउन एंड इट विल हैपन। यू सिंपली राइट इट डाउन एंड इट विल हैपन। आपको जो चाहिए वो पेपर पे लिख दो, एंड वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। बट लेट मी टेल यू दैट ऑन टॉप ऑफ इट, देर आर सर्टन थिंग्स, कि जहां पे आपको क्या बनना है, आपको जो बनना है वो आपको आज से दिखना चाहिए। यू शुड नो व्हाट यू वांट टू बी। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं बहुत बड़ा, बट हमारा जो विजुअलाइजेशन होता है, हमारा जो इमेज होता है, वो उतना बड़ा नहीं होता है। हम बातें बड़ी करते हैं, बट उसका जो जो एक विजन होता है, उसके साथ उसका अलाइनमेंट सही से नहीं होता है। एंड लुक एट दिस इमेज, दिस सेज एवरीथिंग, राइट? Think about it. All right, so let's jump into this particular workshop. And again, अब मैं एक दो और चीजें जो है वो आपको बता दूं। वर्कशॉप जो है उसमें कुछ एक्टिविटीज जो है उसको स्टार्ट करें उससे पहले। And as we all know that these days, the most who is disturbing all of us, and that is our mobile. So please put your mobile on silent, or if it is possible, put it on the aeroplane mode or switch it off. एंड सेकंड जो है, ये पर्टिकुलर वर्कशॉप में कुछ एक्टिविटीज जो है वो करने के लिए वी विल नीड पेन, पेपर। इफ यू आर यूजिंग पेंसिल्स देन यू नीड इरेजर, और 4-5 आप A4 साइज के कलर पेपर्स, या फिर A4 साइज के वाइट पेपर्स जो है उसको ले सकते हैं। एंड इफ यू थिंक यू हैव दी चार्ट पेपर, जो एक बड़ा सा पेपर जो है उसमें, और उसमें सेक्शंस बना के यू वांट टू jot down your goals, you want to do the exercises, तो सारी एक्टिविटीज अपने उस पे भी कर सकते हैं। एंड देन यू कैन एट द एंड एक बार पूरा
वर्कशॉप खत्म हो जाए, आपकी सारी चीजें जो है आप उसमें मेंशन कर दो, उसके बाद में आप उसको कहीं पे वॉल पे उसको स्टिच भी कर सकते हो। या फिर आप अगर A4 साइज के पेपर में करते हो तो आई सजेस्ट गो विद द A4 साइज पेपर, क्योंकि A4 साइज में आप इजीली उसको प्रॉपरली A4 साइज फ्रेम में फ्रेम करके फिर उसको रख पाओगे। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपका जो गोल्स है, आपके जो एक्सपेक्टेशंस है, वो आप आपकी नज़र के सामने रखें, और ताकि मतलब ऑटोमेटिकली जो है वो आप उसको रिव्यू कर पाए। The most important thing is just relax and be comfortable, because यहाँ पे nobody is judging you, right? Because maybe remotely हो, आप आपके हिसाब से वर्कशॉप कर रहे हो, मे बी आप आप या तो ग्रुप ऑफ लोगों के साथ आप ये पर्टिकुलर जो है वर्कशॉप कर रहे हो, या फिर आप अकेले प्राइवेट एक रूम में इसको कर रहे हो। बट द इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिफोर वी एंटर इनटू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, अभी आज का ये जो हम काम कर रहे हैं उसमें यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ ड्यूरिंग द एंटायर वर्कशॉप, बिकॉज ऑनेस्टी इज इम्पोर्टेंट। वाई? क्योंकि हम जितनी भी एक्टिविटीज करने वाले हैं उसमें यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ, यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ, एंड वेन यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ you should not lie, right? Next जो instruction है, that is visualize and express yourself। आपको विजुलाइज करना है, यू हैव टू फुल्ली एक्सप्रेस योरसेल्फ कि आप क्या चाहते हो। हम लोग नीड की बात नहीं करने वाले हैं, हम लोग वांट की बात करने वाले हैं कि व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए। नेक्स्ट इज when we do activities, so you have to mention all your private as well as public things, I mean आपके प्राइवेट गोल्स हो या पब्लिक गोल्स हो, आपको सारी चीजें जो है वो मेंशन करनी है। कुछ चीजें अगर प्राइवेट है तो उसको आप किसी कोड वर्ड में या किसी कोड लैंग्वेज में लिख सकते हो। अगर आप मेंटली प्रेजेंट नहीं हो, आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी और चीजें जो है वो दिमाग में घूम रही है ना, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो फॉर अ स्मॉल अ लिटिल मेडिटेशन प्रैक्टिस। अब मेडिटेशन प्रैक्टिस जो है उसमें आप 2-4 मिनट के लिए आंख बंद करके यू ट्राई टू फोकस ओनली ऑन योर सेल्फ। आप आनापान मेडिटेशन कर सकते हैं, जहाँ पे आप आपका फोकस पूरा जो है वो आप आपकी सांस पे कीजिए, एंड सांस आ रही है, सांस जा रही है, तो आप इसको थोड़ा सा फोकस करोगे, देन यू विल कंट्रोल योर माइंड, यू विल हैव योर ओन थॉट्स विद इन कंट्रोल, है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए एंड देन यू विल फील कंफर्टेबल। ओके, सो इफ यू आर डन विद दैट, लेट्स स्टार्ट। मास्टरिंग आवर विजन की क्या आवश्यकता है? व्हाई मास्टरिंग आवर विजन? क्यों करना है? एंड देर आर स्पेसिफिक रीजंस। हमें लाइफ में हैप्पीनेस, कंफर्ट, वेलनेस, सक्सेस, financial freedom, security, strong and bonding, the relationships, peace, wealth, family, luxury, vacations, बहुत अच्छा सा हेल्थ, सारी चीजें चाहिए। जिस पाथ पे आप काम करने वाले हो, जिस जिस पाथ पे आप चलने वाले हो, राइट, वो पाथ की अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो फिर आप मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? आपको गोल जो है वो अचीव करना है, बट गोल अचीव करने के लिए देर इज अ टाइमलाइन दैट यू हैव टू गो थ्रू, राइट। अब ये टाइमलाइन जो है वो आपको क्लियर करनी है, एंड फॉर दैट क्लैरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लैरिटी इज द की टू एवरीथिंग। एंड जब आपका एक क्लियर विजन होता है तो इट बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सुपर पावर। Once you start to believing in yourself,
मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग. आपको भी पता नहीं होगा, but it automatically starts when you're, because we are ultimately aligned with the nature. हम हमारा जो ये नेचर है उसका एक एक हिस्सा है, एक पार्ट है, right? So that's very important, and there are the several laws of nature, and वो हमारे साथ ऑटोमेटिकली काम करता है. नेक्स्ट, when you have a clear vision, it helps in your accountability, and it improves your motivation. अब देखिए, at the end of the day we are accountable to ourselves. Our success is a result of what we do. One more reason for clear vision is to create our better intentions and enhance productivity in routine life. बिकॉज जब आपके इंटेंशंस जो है वो क्लियर होंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो काफी सारी चीजें इजी हो जाती है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके इंटेंशंस, आपका विजन, आप सोच लो, आप किसी भी कस्टमर के पास जाते हो, आप किसी भी वेंडर के पास जाते हो, आप कोई कोलैबोरेशन के लिए जाते हो, आप इन्वेस्टर के पास जाते हो, तो वो मेजरली जो है वो, व्हेन यू आर एज अ फाउंडर, एज अ प्रमोटर आप जाते हो तो क्या देखते हैं? So the first and foremost thing is they check your vision and intentions, right? They check your vision and intentions. If they feel that your intentions are not clear, nobody will deal with you. Even though you are going to a vendor, right? Vendor will not trust because your intentions are not right. Right? So we need the right intentions, we need the clear intentions, and then only it will help us in the improving productivity. एक और चीज है कि ये जो क्लियर विजन जो है, अगेन आप उसको एक विजन बोर्ड में डाल देते हो, या फिर वो पर्टिकुलर विजन जो है उसको आप आपकी ऑफिस में फ्रेम करके रखते हो, आपके घर में उसको फ्रेम करके रखते हो, then that particular thing reminds yourself of where you want to be. लाइफ में आपको क्या करना है वो आपको बार बार वो चीज याद दिलाएगी, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. कई बार ये होता है कि हम गोल बना देते हैं, हमने कहीं पे लिख दिया, बट वी आर नॉट रिव्यूइंग इट रेगुलरली. अब जब आप रिव्यू इसको रेगुलरली नहीं करते हो तो चीजें जो है वो बदल जाती है, आपका जो फोकस है, आपका जो प्रायोरिटी है वो बदल जाता है. एंड व्हेन योर प्रायोरिटीज आर चेंज, आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? एंड देन एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन यू लुक एट योर गोल्स, यू विल फील लाइक इसमें से कुछ भी अचीव नहीं हुआ, या जितना अचीव होना चाहिए था उतना अचीव नहीं हुआ. राइट? दैट हैपेंस. इट्स वेरी प्रैक्टिकल. ओके, ऑलराइट. सो now let's enter into the workshop. And जैसे मैंने बोला था कि बिफोर वी एंटर इनटू द वर्कशॉप, मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा कि आपके गोल्स जो है वो कैसे होने चाहिए. तो रिमेंबर, योर गोल्स मस्ट बी स्मार्ट. अब स्मार्ट गोल किसको बोलते हैं? स्मार्ट का जो स्पेलिंग है उसमें एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक. Specific is terrific, that we all know. Specific is terrific. अब जब आपका गोल स्पेसिफिक है, then it is the right goal. Second, M stands for measurable. You should have goals which can be easily measured. And दूसरा एक इंग्लिश में कोट है, what gets measured gets done. जब चीजें आप मेजर करते हो वो तो चीजें वो अचीव होती है, वो पूरी होती है. स्मार्ट में अगला जो कैरेक्टर है दैट इज ए. ए दैट मीन्स अचीवेबल. कई बार बोलते हैं लोग अटेनेबल. या दैट इज ऑल्सो राइट. राइट? सो ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल. योर गोल शुड बी अचीवेबल.
Next is R. R stands for relevant. Your goal should be relevant. अब कैसे relevant बोलते हैं, that we will discuss, but ultimately your goal should be relevant. Your goal should be time bound. अगर आपका गोल जो है वो टाइम बाउंड नहीं है, मतलब आपने गोल बना लिया बट वो कब अचीव करना है वो सही, वो आपने डिसाइड नहीं किया है, तो भी वो गोल जो है वो स्मार्ट नहीं है. सो योर गोल शुड बी स्मार्ट. स्मार्ट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड. अच्छा, लेट मी टेल यू अ फैक्ट. एक फैक्ट ऐसी है कि ओनली 3% ऑफ people on this earth have written their goals. Only 3% of people on this earth have written their goals. सिर्फ 3% लोगों ने अपने goals, अपने expectations, अपनी wants लिखी हुई है, and everyone else work for them. बाकी के जो 97% जो लोग हैं वो उन लोगों के लिए काम करते हैं. Only 3% of adults have written their goals and everyone else works for them. Think about it. All right, so let's start, and I suggest you to take one blank paper and let's start with the first activity. पहली एक्टिविटी से शुरुआत करते हैं. And the first activity is you have to define yourself in one word. You have to define yourself in one word. That means आपको आपके बारे में एक वर्ड में एक्सप्लेन डिफाइन करना है. एक वर्ड में आप खुद को कैसे डिफाइन करोगे? So it's very simple. I mean, you can write like so first write your name is then that particular word. एक word जो है उसके बाद में आपको लिखना है. You can write like I let's say for an example I am Pravin. So Pravin is dot dot dot. उसमें हो सकता है magician, can be a determined. Pravin is a visionary. Pravin is empathetic. Pravin is reliable. Pravin is adaptable. Pravin is player. Right? So Pravin can be a singer. So in one word, you have to define yourself. Right? So I hope you are done with this activity. आगे बढ़ते हैं. किसी को बताने की जरूरत नहीं है. आगे बढ़ते हैं. Okay, now next activity is you have to write about life. आपको लाइफ के बारे में लिखना है. अगेन वन वर्ड. जैसे लाइफ इज अ फिर डॉट डॉट डॉट, तो उसमें आप लिख सकते हो कि लाइफ इज अ जर्नी, लाइफ इज एडवेंचर, लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग, लाइफ इज ब्यूटिफुल, लाइफ इज अ स्टेज. somebody says life is a roller coaster. Somebody says life is a story. Somebody says life is a rangoli, and we can fill we can design that particular rangoli. We can put whatever the colors we want to put, right? So in whatever definition you define, एक वर्ड में लाइफ के बारे में आपको लिखना है कि लाइफ इज अ डॉट 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 डॉट. अब यहाँ पे ओके, लेट्स होल्ड फॉर अ मोमेंट. आपने दो एक्टिविटी करी. एक, आपने आपके बारे में एक वर्ड में आपका डेफिनेशन दिया. दूसरा, आपने लाइफ के बारे में एक वर्ड में डेफिनेशन दिया. अब इस दोनों को आप कंबाइन करोगे, देन यू विल फाइंड अ मीनिंग ऑफ इट. एक आपको मीनिंग मिलेगा कि ये लाइफ के बारे में आपका क्या रोल है. व्हेन यू से यू आर अ मैजिशियन एंड लाइफ इज रोलर कोस्टर, think about it.
When you say you are a singer and life is beautiful. When you say you are an entrepreneur and life is adventure, right? So दोनों एक्टिविटी जो है उसको मिला के there is a meaning to your life, there is a meaning to your thought process. Think about it. This is the first thing which needs your attention. This needs your correction. ये it is all about your mindset. आपका mindset कैसा है ये बताता है. And you have to change your mindset if you think it was not written properly, or it has correction after understanding the meaning of it. एक बार चीज समझ में आ गई, उसके बाद में अगर आपको उसको चेंज करना है, यू कैन चेंज इट, डू इट. आइए अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं. और दिस इज समथिंग वेर इन यू हैव टू वर्क ऑन योर टाइमलाइन, जिसको हम बोलते हैं टाइमलाइन ऑफ योर लाइफ. अब ये टाइमलाइन ऑफ योर लाइफ जो है, इसमें जैसे आपकी स्क्रीन पे ये आपको पिक्चर दिख रहा है, यू हैव टू डिजाइन द टेबल, द मैट्रिक्स लाइक दिस. अब ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स में जैसे आप देख रहे हैं, देर आर 5 रोज. अब रोज में हमने लिखा है माइलस्टोन्स, अचीवमेंट्स, ऑब्स्टेकल्स, इन्फ्लुएंस एंड एनर्जी. तो इस पे अपने करेंगे डिटेल में डिस्कशन. और इससे पहले आप एक पूरा चार्ट जो है ये सब बना दो, मैट्रिक्स बना दो. कॉलम्स में आपको ईयर्स डिफाइन करना है. अब ये जो ईयर्स है वो मैंने उसको कुछ 10 साल जो है उसको पीछे ले जाके 4 कॉलम में डिवाइड करके किया है. इसमें आप 4 कॉलम की जगह पे इफ यू हैव स्पेस तो आप उसको 6-7 कॉलम भी कर सकते हो, और इट डिपेंड्स ऑन योर टाइमलाइन. अगर आपका टाइमलाइन जो है वो बहुत छोटा है तो उसको आप 3 साल में मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है, उसको आप 1 साल या 2 साल भी कर सकते हो. इसको आप 3 साल को बढ़ा के 5 साल भी कर सकते हो इफ योर टाइमलाइन इज सच अ लॉन्ग. और इसको आप ज्यादा कॉलम्स में भी कर सकते हो. ओके. अब ये पर्टिकुलर जो एक्टिविटी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिफोर वी start the activity, before you start writing your milestones, achievements, obstacles, influence and energy, take a small break, visualize, because ये एक्टिविटी जो है हम लोग 10 साल पास्ट में जा रहे हैं. पास्ट में जाके हमें देखना है कि पिछले 10 साल में हमारे साथ क्या हुआ था. और एक्चुअली हम जो काम करने वाले हैं वो फ्यूचर के लिए काम करने वाला है. बिकॉज व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द गोल सेटिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द विजन, राइट, सो इट इज ऑल अबाउट डिजाइनिंग आवर फ्यूचर. अब डिजाइनिंग द फ्यूचर जो है उस पर काम करने वाले हैं, बट उससे पहले वी रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि हमारा लास्ट 10 साल का पीरियड जो है वो कैसा था. तो ये पर्टिकुलर चीज जो है वो करने से पहले यू टेक अ स्मॉल ब्रेक, थिंक अबाउट इट, मेडिटेट. फर्स्ट जो कॉलम आपका है उसमें यहाँ पे जो टाइमलाइन, जो ईयर्स हमने मेंशन किए हैं उसके हिसाब से 2012 से 2014 तक आपके माइलस्टोन्स क्या थे, आपके अचीवमेंट्स क्या थे, what were the obstacles during that particular period, who influenced on you during 2012 2014, and उस टाइम पे as an individual, as a person, how was your energy, आपका एनर्जी कैसा था. it was low or medium or high, or it was super high, right? So write it down. आपको एक पर्टिकुलर कॉलम के बाद 2015 से 17 के लिए सेम एक्टिविटीज लिखनी है.
उसके बाद में 2018 से 2020 के लिए यही एक्टिविटीज करनी है। 2021 से 2023 में आपको वही सारी चीजें लिखनी है, बट यू हैव टू थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर पीरियड। यू हैव टू गो इनटू पास्ट, थिंक अबाउट दैट ड्यूरेशन। कोविड था या फिर कुछ और सरकमस्टेंसेस थे, व्हाट वेर द चैलेंजेस, क्या माइलस्टोन्स बनाए थे आपने, क्या अचीव किया, है ना। सो थिंक अबाउट इट। Milestones can be your personal goals, can be like learning to ride a bike or car, obtaining a license, graduating from college or university, 2012, 15, 14. It can be like landing first professional job, can be renting or buying first apartment or house, starting a long term relationship, traveling abroad, starting a business or entrepreneurial venture, traveling to desired destinations, volunteering or giving back to the community, or your milestone was to support a few projects. It was for your career advancements, can be your marriage, can be a long-term partnership, having a children, buying a home, reaching financial stability. Right? There can be even some significant professional achievements. So think about milestones. In the achievements, you can mention all your personal achievements, your professional achievements, relationship and family achievements, community and social achievements. And when we talk about the personal achievement, it can be graduating from high school or college, overcoming a personal fear or challenge, learning new skill or hobby, achieving a significant weight loss or fitness was a goal, competing a marathon or other physical challenge, overcoming an addiction or breaking a bad habit, volunteering for a cause and making a positive impact. And personal achievements can be like landing a desired job or promotion, starting a successful business, receiving recognition or awards for professional accomplishments, completing a challenge in terms of any assignment or it was a challenging project, making a significant contribution to the field or a specific industry, achieving a specific sales or revenue target. What were your achievements? Think about it. If it was related to the relationship and family achievements, so can be getting married or entering into a committed partnership, becoming a parent or expanding the family, celebrating a milestone, anniversary, nurturing strong and healthy relationships with loved ones, overcoming relationship challenges and conflicts, creating a supportive and loving family environment. If your achievements were related to the community and social achievements, then it could be making a positive difference in the
community through volunteering or being an activism, organizing a successful events or fundraisers for a charitable cause, receiving recognition for contributions to social causes or initiatives, building strong networks and connections within the community, inspiring and mentoring others to achieve their goals. What were your achievements? Think for each period. No need to hurry. Take your own time. But think about it. It is your timeline of your life. You can write down obstacles. Obstacles can be again financial, can be health related obstacles, can be relationship related obstacles, can be educational or career obstacles, can be personal development obstacles, can be cultural and societal obstacles, can be life transform transitions and loss, can be life transitions and loss. When we talk about the financial obstacles, it can be debt or financial hardships, can be unemployment or underemployment, can be lack of access to resources or funding. Health obstacles can be physically illness or disability, mental health issues, chronic pain or medical conditions. What were those obstacles during each period? Was it related to relationship, like breakups or divorces, like conflicts and disagreements with family or friends? Can be difficulties in maintaining healthy relationships, or what was it related to the educational and career obstacles? Can be academic challenges or learning disabilities, limited educational opportunities or access to quality education, job insecurity or lack of career advancements opportunity. Think about it. Was it related to personal development obstacles like self doubt or low self esteem or low self confidence? It can be like, the procrastination and lack of motivation. There was a fear of failure or rejection. Sometimes it can be a cultural or societal obstacles, discrimination and prejudice based on race, gender, or other factors, limited opportunities or systemic barriers, social expectations and pressure to conform. Obstacles can be related to life transitions and loss. There was a loss of a loved one. Moving to a new city or a country can be, one of the transition in your life. Divorce or separation can be an important obstacle in your life. Think about it, right? Obstacles for each period.
You have to be very careful when you are writing your milestones, achievements, obstacles, because this is not just writing it on the paper, it is going to help in designing the future. It is going to support, uh, it is going to be support for your goals. Last two are very simple. You have to think about the people with whom you were working, right? And think about who influence on you. Can be, your business partner, can be your employee, can be your spouse, can be your friend. Think about it. And there can be multiple persons also. Write it down. You have to write name clearly. Write full name so that you can recall, you can remember. And in the last row, you have to write that what were the energy. Here you should be very specific. You should be specific, like how was your energy in the period 2012 to 14. You should be specific that how your energy should be, well, I mean, how your energy was in 2015 to 17. Likewise, for other periods. How was your energy? It cannot be like high and super high both. It either can be high or it can be super high, or it can be low or medium. Be specific with yourself and write it down. This entire exercise should take your 15 to 25 minutes. Take your own time. Don't hurry. Once you are done with the previous activity, we have one more activity, and that is again related to your past, wherein you have to list down 5 things which you have already accomplished and you are proud of. Write down 5 things which you have already accomplished, which you proud of. And you have to write it like today is so and so date, and I am so proud of. Then jot down 5 things. Again, you have to go into the entire past journey. Think about what were those 5 things you are proud of today. It can be like you completed your degree and you got rank in the university or college, or you had won the competition, or you passed with specific percentages which were you were expecting and you got it. It can be like you have been recognized by so and so person or so and so organization. Your organization was recognized. What are the set of things which you are proud of? You wrote a book, you visited certain countries and you are proud of. There are certain numbers you have achieved in your business. There can be
the extracurricular achievements you had. There were certain educational achievements you have. You read 50 books, can be one of the thing which you are proud of. You achieved certain milestones and you are proud of. So list out what are those 5 things you have already accomplished which you proud of. Take your own time. Don't hurry. This is going to be very helpful in designing your future, in mastering your vision. Very, very important. Believe me. All right. Now we are entering into one more activity, and that is regarding the regrets. Again, take a blank paper and you have to write regrets. Here there is no limit, and you can mention 2, 4, 5, 10, 12, n number of regrets. So again, you have to mention like today is the 3rd June or whatever the date today is for you, and I regret 4. Then give the numbers like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and write down what was the first regret, right? So can be like not pursuing a passion can be one of your regret. Neglecting relationships can be a regret. You missed certain opportunities can be a regret, wherein today you are thinking that if suppose ये कर लिया होता मैंने, ये अपॉर्चुनिटी को अगर मिस नहीं किया होता तो आज मेरे पास इतनी चीजें होती, मैं ये होता, मैं वो होता. Not expressing the feelings can be one of the regret. Not prioritizing personal development can be a regret. Neglecting self-care and health can be a regret. Not being true to oneself can be a regret. Not maintaining work-life balance. There can be financial regrets. There can be not taking risk can be a regret. Wasting time on unimportant things in the past can be one of your regret. Even you can think beyond this list and you can write your own regrets. What were the regrets? चीजें जो आपने मिस करी, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने सही से उसको निभाया नहीं, जितने भी रिग्रेट्स है, write it down. Write down all your regrets. Take your own time. Go into past. Think about it. Write it down. Now we are jumping for the next activity, and I think this is something which is very powerful. एंड ये पर्टिकुलर चीज करने के लिए हम लोग ये वर्कशॉप जो है इसको अटेंड कर रहे हैं आज. द एक्टिविटी इज व्हाट डू यू वांट इन नेक्स्ट 10 years. व्हाट डू यू वांट इन नेक्स्ट 10 years. आपको अगले 10 साल में क्या चाहिए? व्हाट आर योर वांट्स? अगेन यू हैव टू टेक अ न्यू पेपर. एक पेपर पे you have to put your goals one by one. उसको आप
कॉलम में नहीं करना है, एक कॉल साइड बाय साइड नहीं करना है, यू हैव टू पुट वन आफ्टर अदर, ऐसे लाइन बाय लाइन इसको आपको इसमें लिखना है। एंड दिस इज समथिंग जहां पे यू हैव टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। ये एक्टिविटी जो है इसमें आपका मिनिमम 25 से 30 मिनट जाने चाहिए, क्योंकि इसमें आपको जो चीजें, जितनी भी चीजें आपको चाहिए वो सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है। द लिस्ट शुड गो टू मिनिमम 100 थिंग्स, क्योंकि आप 100 से ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट करते हो। So, take your time, write down all things which you want immediately, all things which you want after 5 years, after 10 years, within 10 years. तो जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है। सो योर गोल्स, आपको जो गोल्स लिखने हैं, इट कैन बी a short term as well as long term, and it can be personal, professional and health related goals। तो आपको सारी चीजें इसमें लिखनी है। अगेन आपको इमेजिन करना है, एंड आपको बहुत सारी चीजें जो है उसके बारे में सोचना है। तो अगर आपको एक छोटा सा ब्रेक लेने की जरूरत है तो यू कैन गो फॉर द ब्रेक and then come back. Imagine that there are no limitations on what you can be, have or do, right? If your life was perfect in each area, what it look like, क्या क्या हो सकता है, मतलब आप सोचो कि कोई लिमिटेशन ही नहीं है, एवरीथिंग यू विश एंड आपको मिलेगा। थिंक अबाउट इट। आप ऐसे सोचो कि आप अगर ये आज जो आप चाहोगे, जो लिखोगे, वो आपको 100% मिलने वाला है। एंड उसके हिसाब से आपको कोई भी लिमिटेशन जो है उसको याद नहीं करनी है। फॉरगेट अबाउट ऑल द बैरियर्स, ऑल द लिमिटेशंस, एंड स्टार्ट थिंकिंग, स्टार्ट इमेजिंग, start your imagination about income, wealth and financial freedom which you want. Think about the family, think about the happiness and comfort you want in your life, think about the peace you want in your life, think about the success you want in your life, think about health and wellness, think about vacations you want to go for, think about the luxury you want in your life, think about the relationship you want in your life. इसके साथ साथ आपको ये भी सोचना है कि what experience do you want, which countries do you want to visit, whether do you want to learn to play a musical instrument. I don't know how to play guitar, so it is in my list. I have not visited America yet, it is in my list. I haven't visited Australia yet, it is in my list. Think about what or which property you want to buy. Your goal can be having a dinner with Prime Minister or the Chief Minister of your state. Goal can be support certain projects. Goal can be regarding the investments which you want to make. It can be related to the financial independent. Becoming financial independent, it should be a goal. It must be a goal, because if you really want to pursue your passion, if you really want to become what you want to be,
you should be financial independent. अगर आप financial independent नहीं है तो फिर आपका पैशन का काम नहीं करोगे, आपका पैशन का काम नहीं करोगे तो आपके ड्रीम्स कैसे पूरे होंगे? Your goal should be to become financial independent. You can mention like what kind of office do you want? You can mention like you want $1 million home. You can mention like you want 10 offices in 10 different countries. You can mention like you want to visit 50 countries in next 10 years. Take your time and write down all your goals. Give this particular video a pause and write down all your short-term, long-term goals. It should take 25 to 30 minutes to think about your goals. ये भी सोचिए कि जो रिग्रेट्स आपने मेंशन किए हैं उसमें से क्या क्या चीजें आप फिर से चाहते हैं. What are the set of things you want to take from your regrets? Think about it. सारे जो आपके want है, नीड की हम बात नहीं कर रहे हैं. दिस इज ऑल अबाउट योर वांट. आपको व्हाट डू यू वांट? मेंशन ऑल योर private as well as public goals. And again, as we have discussed in the beginning, your goals should be smart. It has to be specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. अब जो relevant की हम बात कर रहे थे, so relevant that means कि आपका जो जर्नी है, जो पाथ आपने डिसाइड किया है, वो पाथ के रिलेवेंट वो गोल होना चाहिए. It should not be like you want to become a farmer and you will operate a patient. No, it is not possible, right? Absolutely, a doctor can go into farm and do farming, but you should have specific and relevant goals that what exactly you want in your life. All right, take your time and you can pause the video, and then once you are done with all your goal listing, goal setting, then we will go for the next activity. Again, next a few activities are going to be very, very interesting, and it is going to be eye-opening because this is something wherein we are designing your future. Okay, all right. So I'm sure you are done with writing all your goals. आपने सारे goals जो है वो लिख दिए हैं, आपने jot down कर दिए हैं. अब next जो है हम लोग एक और एक्टिविटी करने जा रहे हैं, and that is about prioritizing them by giving year numbers like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आपने जितने भी गोल्स लिखे हैं, लिस्ट कैन हैव like 50 goals or 100 goals, maybe someone can have 150 or 200. जितनी भी चीजें आपने लिखी है उसमें आपको
एक लेबल देना है. 1 दैट मीन्स यू वांट दिस पर्टिकुलर थिंग शुड हैपन इन द फर्स्ट ईयर. 2 दैट मीन्स ये 2 साल में आपको चाहिए. 3 दैट मीन्स ये आपको 3 साल में चाहिए. 4 दैट मीन्स दिस इज समथिंग विच यू वांट in the period of 4 years. 5 that means within 5 years. 6, 7, 8, 9, 10. So this is how we really want to divide our goals as short-term goals and long-term goals. Take your time, give labels, and once you are done with the labeling, think about that how many goals you want in first year, the second year, the third year, fourth year, fifth year. And then what you can do is you can make separate sheets for each year. That will be your year wise goals. Again, you can give, or you can change the order, change the priorities, but you have to balance goals year wise. You also have to think कि ये आप जो आपने प्लान बनाया है कि ये 1 साल में मुझे करना है, but it should be measurable, it should be specific, it should be relevant, it should be time bound, कि वो 1 साल में सही में हो सके ऐसी चीज है ना. कई बार ऐसा होता है कि कुछ गोल ऐसा हम डिसाइड कर लेते हैं कि वो पॉसिबल ही नहीं है 1 साल में, क्योंकि उसको कुछ टाइम तो चाहिए ही चाहिए, है ना. सो थिंक अबाउट इट. आपके जितने भी गोल्स है उसमें उसको अगर जरूरत पड़े तो रीप्रायोरिटाइज करिए, उसको रीऑर्डर कीजिए, एंड मेक ए बैलेंस फॉर ईच ईयर. ये एट द एंड 10 साल के बाद अगर इस ऑर्डर में आपने काम किया तो 10 साल के बाद क्या होगा, right? And what is the long term goal? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं. एंड एक और एक्टिविटी जो है दैट इज अगेन वेरी पावरफुल, एंड दैट इज ये जितने भी गोल्स आपने अभी तक लिखे हैं, ये सारे गोल्स में से यू टू फाइंड आउट 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स. 4 ऐसे गोल्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है. सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसा लगता है कि दिस इज समथिंग विच आई मस्ट वांट, दिस इज मस्ट. ऐसे 4 जो आपको मस्ट लगते हैं, लाइक यू वांट टू मैरी विथ अ पर्टिकुलर गर्ल, you want $1 million house, you want to visit one specific country. क्या है? What are the 4 most important goals for you? अब एक बार ये आप 4 गोल जो है वो एक बार आपने लिख दिए. वंस यू हैव रिटन ऑल 4 गोल्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, उसके बाद में यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दैट व्हाई दिस 4 गोल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये 4 गोल क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में. थिंक अबाउट इट. लाइक व्हाई डू यू नीड $1 million होम. क्या करना है $1 million होम को लेके. Why do you want to establish business in 10 countries? What is the objective out of it? Think about it. Ask yourself why. Right? So you will get these answers, and it will, help you to design your future. That, many times we are not clear that why we want, but still we want. कई बार ऐसा होता है कि हमें मुझे ये चाहिए, बट क्यों चाहिए, that clarity we don't have. So it is very, very important that we should know that why we need this particular things. Okay, so friends, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एक्टिविटी जो है उस पर फोकस करते हैं. एंड द नेक्स्ट एक्टिविटी इज अबाउट आइडेंटिफाइंग
the knowledge, information, and skills you will need to achieve your goals. Because writing your goals will not give you results automatically, right? It can definitely help when your vision is clear, but it does not mean that एक बार आपने गोल लिख दिए तो चीजें ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपके साथ हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, right? So it is something wherein now we have to prepare for the future. We have to gain some knowledge. We have to take find some information. We have to develop certain skills so that we can achieve our goals, right? So take one more sheet and make the title, make the heading like identify the knowledge, information, and skills you will need to achieve your goals. Write down the knowledge, the information, and skills you will need to achieve your goals. ये पर्टिकुलर एक्टिविटी और एक्सरसाइज जो है वो आप टाइम लेके कर सकते हो, बिकॉज इट मे रिक्वायर सम सम रिसर्च, क्योंकि आपके गोल्स क्या है वो मुझे पता नहीं है. सो आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू certain examples, but what you can do is you can find out through the web or some sort of other research techniques कि आपको आपके गोल्स अचीव करने के लिए क्या नॉलेज, क्या इंफॉर्मेशन एंड व्हाट सेट ऑफ स्किल्स यू विल नीड. अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो यू कैन speak to your mentors, your advisors, your coach, your consultants, your friends, है ना. आप डिस्कस कीजिए एंड ट्राई टू फिगर आउट दैट what are the knowledge, information, and skills you will need to achieve these goals. Okay, so let's move forward, and next activity we are going to do is identifying the obstacles that you will have to overcome to achieve your goal. हमने देखा कि इनिशियल जो 10 साल हमने पास्ट में जाके देखा, उसमें हमने देखा कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स थे, और वो ऑब्स्टेकल्स जो है वो अगर फ्यूचर में भी रहेंगे देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम, राइट? सो what we have to do is we have to find out that what are the obstacles, who is stopping you, and क्या ऑब्स्टिकल्स जो है उसको ओवरकम करना पड़ेगा, तब जाके ये गोल सारे अचीव होंगे. There is a theory of constraints, and it says there is always one limiting factor or constraint that sets the speed at which you achieve your goal. So you have to figure out what is yours. You have to figure out that which are your constraints, what are the obstacles. And let me also tell you that there is a rule which is called 80-20 rule, and it says 80% of the reasons that are holding you back are inside yourself. Only 20% of the reasons are outside of yourself, and we are not aware about these limitations. We are not aware about constraints or these obstacles, but it is very, very important to identify. जब तक ये पता नहीं चलेगा तो we will not be able to achieve our goals. So 80% of the reasons that are holding you back are inside yourself. So what are those reasons? Figure it out, find it out. It will again take your time. All right, so moving forward, and next
one more important activity, and that is what kind of a person you must become to achieve all you want. And let me tell you that जब आपके पास कोई चीज आती है तो वो इसीलिए नहीं आती है कि आप उसको एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट वो इसीलिए आती है क्योंकि अब आप उसको डिजर्व करते हो. सो यू हैव टू बिकम फर्स्ट, you have to become that kind of person first, so that those goals will be achieved. और वो सारी चीजें जो आपको चाहिए वो आप जब एक डिजर्विंग पर्सन बन जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी. यहाँ पे मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी बताना चाहूंगा कि जैसे एक फ्रेशर जो जॉब की तलाश में है, फर्स्ट जॉब ढूंढ रहा है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने के लिए जाता है, तो हर बार जो एचआर डिपार्टमेंट है वो पर्सन से काफी सारी चीजें एक्सपेक्ट करता है कि ये पर्सन जो है उसके पास खुद का व्हीकल होना चाहिए, उसका जो ड्रेसिंग स्टाइल जो है वो ग्रूम करने की जरूरत है, या फिर वो पर्सन के पास खुद का एक लैपटॉप, एक मोबाइल, एक ये फलाना वो सारे गैजेट्स और डिवाइसेस जो है वो, बिकॉज द रोल इज इन सच अ वे कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर वो एक सेल्स का जॉब है, एक सेल्स की प्रोफाइल के लिए वो कैंडिडेट ढूंढते हैं, तो वो ये सारी क्वालिटीज जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं. अब एचआर और द एचआर डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टिंग दैट कैंडिडेट के पास इतनी सारी चीजें होनी चाहिए. अब एम्प्लॉय क्या सोचता है, अभी यार फर्स्ट जॉब है, अभी तक सारे पैसे जो है वो पापा के पास से लेकर हमने पढ़ाई करी, अब एक बार जॉब मिल जाए उसके बाद में मैं एक खुद का व्हीकल ले लूंगा, मैं एक लैपटॉप ले लूंगा, मैं एक एडवांस मोबाइल फोन ले लूंगा, मैं बेहतरीन कपड़े जो है उसकी शॉपिंग करूंगा ताकि मैं ग्रूम कर सकूं मेरी लाइफस्टाइल को, मैं खुद अच्छा दिखूं, ऐसा बन सकूं. अब एचआर को ऐसा है कि ये बंदा ऐसा हो तो मैं उसको जॉब दूं. अब वो कैंडिडेट जो है वो ऐसा सोचता है कि उसको एक जॉब चाहिए ताकि वो ऐसा बन पाए. अब क्या होगा, थिंक अबाउट इट. अब 110% ऐसा ही होगा कि वो बंदे को जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज स्टिल नॉट अ डिजर्विंग प्रोफाइल. वो नॉलेज में सब जगह पे अच्छा है, बट वो एक डिजर्विंग प्रोफाइल होनी जरूरी है. तो यू हैव टू बिकम, जो आप फ्यूचर में बनना चाहते हो वो आपको आज बनना पड़ेगा. वेर इन देर शुड बी सर्टन काइंड ऑफ qualities or certain kind of things which you have to improve. So ask yourself this question, that what kind of a person you must become to achieve all you want. उसमें आपको आंसर मिलेगा कि यू शुड बी अ वेरी स्किलफुल पर्सन, यू शुड बी वेरी अट्रैक्टिव पर्सन, you should have patience, you should be a visionary thinker, you should be a risk taker and resilient, you should be a creative and problem solver, you should have a strong work ethics, you should have flexibility and adaptability, you should have leadership and team building skills, you should have business networking and relationship building skills. तो ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी है, आप ये सारी चीजें आपको सोचनी है, एंड देन you will get the answer that what kind of a person you must become to achieve all you want and become that person. All right, so this was all about the activities that we have done as far as going into past and thinking about the future. And we have tried to balance the past as well as future. And now, last but not least, सबसे important activity जो हम करने वाले हैं, and that is design the vision board, that is called design the future.
अब डिजाइन द फ्यूचर जो है, ये पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के लिए यू हैव टू टेक सर्टेन क्लिप आर्ट्स। आप कुछ मैगजीन्स जो है वो ले सकते हो, कुछ न्यूज़पेपर्स ले सकते हो, एंड टेक बिग चार्ट पेपर। और अगर आपके जो क्लिप आर्ट्स और वो छोटे छोटे हैं, तो यू कैन ऑल्सो हैव A4 साइज पेपर, बट उसको प्रॉपरली डिजाइन करना है। तो आप जितनी भी चीजें आपने गोल्स में लिखी है, स्पेशली द 4 इम्पोर्टेंट गोल्स और द प्रायोरिटीज यू हैव, राइट, उसके हिसाब से यू हैव टू फाइंड द एग्जैक्ट पिक्चर। कि अगर आप यू आर your goal is to buy a watch, right? So वो वॉच आप कैसी दिखनी चाहिए, कौन सी ब्रांड की होनी चाहिए, उसका पिक्चर कैसा होना चाहिए। तो फाइंड दैट पिक्चर। अगर पिक्चर्स आपको कहीं से नहीं मिल रहे हैं, तो टेक इट फ्रॉम गूगल, मेक अ कलर प्रिंट आउट, एंड देन पुट इट ऑन द विजन बोर्ड। बट एक बेहतरीन आपको विजन बोर्ड जो है वो बनाना है। तो उसमें आपको मेंशन करनी है सारी चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल यू वांट टू बिकम अ टेड टॉक स्पीकर, तो पुट अ पिक्चर ऑफ टेड टॉक। इफ यू रियली वांट टू visit the New York City, so put a picture of New York City. If you really want to live a healthy life, so put your picture with some foods and everything, right? And so everything whatever you have in your goal sheet, put it in the vision board, and design your future now with proper clip arts, images, pictures, and jot down all your goals. एंड एक बार ये चीज बन जाए, उसके बाद में फ्रेम इट वेल, उसको एक अच्छी तरीके से फ्रेम कर दीजिए, एंड वो आपकी नजर के सामने सामने रहे, इसी जगह पे उसको आप हैंग कर सकते हो। इट कैन बी योर ड्राइंग रूम, इट कैन बी योर बेडरूम, right? And last but not least is, and the rule which is very very important, and that is, you have to regularly review and update your vision board। और जो भी गोल्स आपने बनाया है, right, regularly you have to review, because when it is about your vision, when it is about mastering your vision, it is important that you review it regularly। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है, वेर इन यू हैव टू सेलिब्रेट अकम्प्लिशमेंट्स। जितने जितने गोल्स आप अचीव करते जाओ, वो उतने उतने गोल्स आप सेलिब्रेट करो। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर गोल्स विच यू हैव अकम्प्लिश विच वेर रिलेटेड टू योर फैमिली, तो सेलिब्रेट विथ फैमिली। कुछ गोल्स जो है वो आपके पर्सनल थे, एंड you were expecting some status or something like that, celebrate with your friends। कुछ गोल्स आपके बिजनेस के थे, जो बिजनेस गोल्स थे वो अकम्प्लिश होते हैं, तो सेलिब्रेट विथ योर टीम, विथ योर स्टाफ, विथ योर कलीग्स। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड ये पर्टिकुलर पूरा जो वर्कशॉप आपने एक्सपीरियंस किया, आपने अभी तक मेरे साथ रहे, तो ये वर्कशॉप आई हैव डिजाइन यूजिंग these books, and I strongly recommend you also to read out these 5 books, and these are the very powerful books, and it is something wherein uh, you know not just like one time read, but you can read again and again all these books. So thank you so much, everyone. If you have any questions or anything, so I'm putting my contact details here. You can anytime contact me. Also, you can, uh, share your experience in the comment box. And if you have not subscribed yet, so please do not forget to subscribe this particular channel. And do not forget to click on that particular bell icon, because that is the one which will give you a notification whenever, we will have new video for you, right? So thank you so much, everyone, and I'm looking for the positive feedback, and looking to connect with all the entrepreneurs,
And so we are running a community, a network which is called Peers Global Network, and we really want to empower the entrepreneurs, the female entrepreneurs, the greenpreneurs, and all the MSME entrepreneurs, those who are struggling and those who are really looking for a platform like Peers Global, right? So you all are welcome. Do join. Let us, change the whole world. And yeah, so last but not least is we are working on a mission to enhance lives of 1 million entrepreneurs, and that is something which I am, keep repeating in all my videos, all my interviews, and all my workshops, all my sessions. So once again, thank you so much for attending this particular workshop, and listening me for the long period of time, because this is a very lengthy and detailed workshop, and it gives results 100%, right? So but stick to it. If you if you have not understood it well, uh, you can re-watch the same video so that it will clear a lot of your doubts, questions, queries. And thank you so much. I'm your friend Pravin Parmar from psglobal.com. Thank you.